वडोदरा में धोखाधड़ी का भोग बनने वाले शिकायतकर्ता और उनके एडवोकेट भाविन व्यास की ओर से पत्रकार परिषद आज आयोजित करवाते हुए इस मामले पर ज्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई थी। दरअसल चेन्नई तमिलनाडु के चुनिल चौधरी उनके साथ वडोदरा में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 18,60,000 जितने रुपयों की उनके साथ ठगी हुई है और इस मामले की शिकायत सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। ऐसे में आज शिकायतकर्ता चुनिल चौधरी और उनके एडवोकेट भाविन व्यास ने पत्रकार परिषद आयोजित की थी और इस पत्रकार परिषद के तहत मामले पर ज़्यादा जानकारी देते हुए उनकी ओर से ये मांग की गई है कि ठगी करने वाले इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा सुनाई जाए। बहु अलग जातनी मोडस ऑपरेंडी छे। आ गुનેગાર છે તે ખૂબ જ નાની ઉંમરના છે। શાળામાં ભણતા એટલે કે 11મા 12મા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ બેટલ ગ્રાઉન્ડ ઇન્ડિયા પર આ ભાઈ ફરિયાદી તમિલનાડુ ચેન્નઈના રહેવાસી છે તેને મળે છે। એમ્સના ડોક્ટર હોવાની ઓળખ આપે છે। આ ભાઈને શારીરિક પ્રોબ્લેમ છે, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ છે, હાર્ટ પેશન્ટ છે એટલે હાર્ટનો ઇલાજ કરવાના બહાને અલગ અલગ બહાના બતાવીને 18,60,000 રૂપિયાની છેતરપિંડી કરે છે। ત્યારબાદ બેંક ઓફ બરોડાનો ખોટો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ 100 કરોડનો બતાવે છે। વિધિ કુમાવત, રુદ્ર પટેલ, ધ્રુવ પટેલ નામના માણસોની એન્ટ્રી થાય છે। એ પણ ફોનિક્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ વડોદરાની છે, એના વિદ્યાર્થીઓ હતા। આ ઉત્સવ યોગેશભાઈ માળી જે ચીટર છે એ વડોદરાનો રહેવાસી ફોનિક્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો સ્ટુડન્ટ હતો। શાળામાં ભણતા સમયે જ આ લોકોએ કાવતરા કૌભાંડ કરીને આને છેતર્યો અને પોલીસનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે પોલીસ કમિશનર શ્રી વડોદરાના કારણે જ આને ન્યાય મળ્યો। એફઆઈઆર સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 13/1/24ના રોજ દાખલ થઈ, પરંતુ એમ્સના ડોક્ટરની ખોટી ઓળખ આપવી તેનો ગુનો, તેની કલમ દાખલ થવી જોઈએ। ખોટો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ 100 કરોડનો બતાવ્યો એની કલમ દાખલ થવી જોઈએ। બીજા કયા કયા આરોપી છે, બીજા કયા કયા લોકો આ કાવતરામાં સામેલ છે, સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ ફોનિક્સના મુકેશ દદવાનીના આનો સંપર્ક કર્યો તો એ બધું જ જાણે છે, તો એમને કેમ મદદ ના કરી, ગુનો કેમ છુપાયો, આરોપી ગુનેગારોને કેમ છુપાયા, એ બધી માહિતી પોલીસ તપાસે તો ઘણા મોટા કૌભાંડ અને આવા 100-200 લોકોને છેતર્યા હશે, 100-200 પીપલ બીજા છેતરાયા હશે, તે બહાર આવશે। मेरे साथ विश्वासघात धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है पैसों का ऑनलाइन, और जिसने किया उसका नाम उत्सव माली, वडोदरा भायली से है, बसंत नगर पार्क व्यू। और जिसने वो मुझे ऐसे ठगाता था कि भरोसा दिलाता था कि मुझे कारोबार में फाइनेंस करेगा, और मैं बहुत तरक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं तुझे हर तकलीफ में सहारा दूंगा, तुम्हारे हर परेशानी दूर करूंगा, तुम्हारा इलाज करूंगा, और बहुत छोटी बड़ी बातें भी मेरे सपने साकार करूंगा, मतलब तो मेरे पहचान अपने आप को बिजनेसमैन, जेन्युइनली मेरे अपने आप को सच पहचान किया था उसको, पर मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं था। फिर भी उसने अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि वो क्या क्या करता है, सब दिन मुझे फोन करके बोलता था कि आज कितने ऑपरेशन किए उसने और कहाँ पे है, और उसका दिल्ली का फ्लाइट का टिकट वो मुझे बताता था, शेड्यूल। तो मुझे बहुत छोटी छोटी बात बताने की वजह से मुझे विश्वास हुआ कि वो डॉक्टर है, कार्डियो सर्जन। और बीच में जब शक हुआ, उसने अपने साथी को शामिल किया, हार्ट कंसल्टेंट विधि कुमावत और बैंक ऑफ बड़ौदा वर्कर एंड मैनेजर ध्रुव पटेल, रुद्रा पटेल और उनके अनेक साथी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।